detecting serial correlation, first is you draw a residual plot, उसी में तुमको पॉजिटिव या नेगेटिव नजर आ जाएगा. दूसरा है you can run two tests. The first test is your Durbin-Watson test and the other is Bruce-Godfrey test. तो अब ये डर्बन वॉटसन क्या है, ये ब्रूस गॉडफ्री क्या है. पहले सीएफए इंस्टीट्यूट डर्बन वॉटसन टेस्ट पे बहुत एम्फसाइज करता था, उसका भी पूरा टेस्टिंग तुम लोगों को लास्ट ईयर के बुक्स तक तो पूरा इसका टेस्टिंग ये लोग दिखाया हुआ है कि कैसे करना है. ये साल ये लोग इसका टेस्टिंग को छोड़ दिए. ओके, now there is a problem with the Durbin-Watson test. The problem is that it can be used to test first order serial correlation. It can only be used to test first order serial correlation. मतलब फर्स्ट ऑर्डर सीरियल कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन बिटवीन ईटी एंड ईटी माइनस वन. सिर्फ यही चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक सीरियल कोरिलेशन एट लैग वन बट यू कांट चेक सीरियल कोरिलेशन एट लैग टू लैग थ्री. ऐसे नहीं कर सकते. सो यू कांट यूज डर्बन वॉटसन, you cannot use it to check if there is 4L at lag 2, जैसे ET and ET minus 2. ET, this is lag 2, right? ET and ET minus 3. ऐसे नहीं कर सकते. तो ये डर्बन वॉटसन का लिमिटेशन है, इसलिए अब सीएफए इंस्टीट्यूट इस पे इतना दिमाग नहीं लगा रहा, right? Because it can be used to check serial correlation at lag 1, right? Serial correlation amongst error terms at lag 1. अब ब्रूस गॉडफ्री टेस्ट, right? अब ब्रूस गॉडफ्री टेस्ट का यही फायदा है कि इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट सीरियल कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन एट हायर लैग्स. तो मतलब अब ब्रूस गॉडफ्री में अपने ET एंड ET माइनस वन का भी कर सकते हैं, ET एंड ET माइनस टू का भी कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन use this to test serial correlation at higher lags. ठीक है ना? ET एंड ET माइनस थ्री का भी कर सकते. So how does this work? Again इसका भी स्टेप्स है, समझना होगा. सपोज ये मॉडल है y इक्वल्स b0 प्लस b1 इंटू x1 प्लस सम एरर, राइट? सो यू calculate b0 and b1 using OLS, right? Then calculate the errors, right? How will you calculate the error? Predicted y minus actual y, right? Okay, now to check for serial correlation at lag 1, that is to check whether there is correlation between ET and ET minus 1, what you are going to do is ये मॉडल से जो एरर निकलेगा ना, ये एरर उसको अपने ET बोलेंगे. हम लोग इस ET को ना वी आर गोइंग टू रिग्रेस दिस ET against the independent variable and
the lagged value of the error term. तो ऐसा होगा. तो ऐसा एक रिग्रेशन रन करेंगे. ये जो फाइल लिखने का मैंने कोशिश किया है, बेसिकली दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ the errors yesterday, coefficient of errors at टाइम t माइनस वन. ठीक है ना. तो ये हम लोग सेकेंड रिग्रेशन करेंगे. वैसे समझ में आ रहा है. वैसा ही कुछ है, ब्रूश पगान टेस्ट जैसा ही. नाउ टू चेक वेदर देर इज ऑटो कोरिलेशन एट lag 1 और देर इज सीरियल कोरिलेशन एट lag 1. जो ओरिजिनल मॉडल, जो फर्स्ट मॉडल से एरर्स निकल रहा है, वी आर गोइंग टू रिग्रेस इट अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द एरर्स एट lag 1. ठीक है ना. Now we are going to calculate the R square of this regression, of this second regression. अब if R square of this regression is close to 0, what does this mean? This will mean that errors at it basically means that errors at time t minus 1 do not explain errors at time t. So there is no correlation amongst the two, right? So there is no autocorrelation at lag 1. There is no serial correlation at lag 1 in this original model. And if R square is greater than 0, close to 1, then Et minus 1 does explain Et. And serial correlation, autocorrelation is present at lag 1. ठीक है ना. तो वही फंडा है जो पहला फंडा था. ठीक है. नाउ यू रन अ हाइपोथेसिस टेस्ट. अपने एफ टेस्ट यूज कर सकते हैं या काई स्क्वायर टेस्ट, दोनों यूज हो सकता है इसमें. थैंकफुली तुम लोग को टेस्ट स्टेटिस्टिक और क्रिटिकल वैल्यू दिया होगा. ठीक है. एंड जो नल होगा होगा आर स्क्वायर इक्वल 0. एंड इफ आर स्क्वायर इक्वल 0 देन देर इज नो सीरियल कोरिलेशन. एकदम सेम हेट्रोस्केडास्टिसिटी, कंडीशनल हेट्रोस्केडास्टिसिटी वाला. देर इज नो सीरियल कोरिलेशन. एंड because if r square is equal to 0, then errors at time t minus 1 do not explain errors at time t, right? So there is no correlation. And alternate hoga r square greater than, right? Serial correlation exists. So if you reject the null and favor the alternate, then serial correlation exists. If you reject HO and favor alternate, serial correlation is going to be there. However, if you fail to reject the null, there is no serial correlation. No serial correlation. Okay, तो ये पूरा आइडिया है गाइस. Yes, sir. क्लियर है. Yes, sir. ऐश्वर्या तेरे को क्लियर है. Clear.
अब देखो, अगर बात को समझो, अगर अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक कैसे भी निकालते हैं वो सब का मैटर नहीं है, अगर अपने एफ टेस्ट यूज करें या काई स्क्वायर टेस्ट यूज करें, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन इज बाउंडेड बाय जीरो, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन इज बाउंडेड बाय जीरो, सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू check the right tail, right? We are always going to check the right tail. तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, independent variable was a lag version of the डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कोएफिशिएंट एस्टिमेट तो इनवैलिड होगा। डिफ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर क्यों है, वो ये बात समझो। ब्रूश गॉडफ्री टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 3.927, तो क्रिटिकल क्या है, 3.927। एरिया टू द राइट ऑफ द क्रिटिकल इज माय रिजेक्शन एरिया, सो दिस इज माय this area shaded in this green color, this is my rejection area. So does my critical value lie in the does my test statistic lie in the rejection area? Does my test statistic lie in the rejection area? Yes, it is some 12.124, so it lies. So I reject the null, and if I reject the null and favor the alternate, serial correlation is there. Now ये क्या बोल रहा है, deflated standard errors, डिफ्लेटेड मतलब स्टैंडर्ड एरर कम है, तो ये वापस वही बात पे आ जा रहा है जो एकदम इनिशियली अपने किए थे, कि अपने स्टैंडर्ड एरर मतलब अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक मोटा मोटी हर बार कैसे निकालते हैं, बीटा वन हैट माइनस hypothesized value which is 0 by standard error. So if the standard error is low or deflated, तभी तो टेस्ट स्टेटिस्टिक हाई होगा ना। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक हाई है, टेस्ट स्टेटिस्टिक हाई इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड एरर डिफ्लेटेड, स्टैंडर्ड एरर लो। ठीक है, समझ में आया गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। पूरा क्लियर है मैटर? अब इसके बाद देखो क्वेश्चन 3 कर लें। यस सर। हाँ, मल्टीकुलरिटी भी अभी कर लेना, अब ना होगा भाई मेरे से। आज के लिए